about a hernia surgeries. Welcome to Inside News. This is Shekina bringing you the latest updates and insights across the nation. Let's get into the details. BJP leader Sanjay Mayok expressed his deep sorrow over the passing of Kishore Kunal, describing him as a shining figure in the socio-religious world. Mayok recalled Kunal's significant contributions to social service, particularly during his tenure as a civil servant. He highlighted that Kunal's impact was not limited to Bihar but was felt across the country, and his contributions to society would always be remembered. Mayok extended his heartfelt condolences to Kunal's family and emphasized the grief shared by all Sanatanis and social workers across the nation. सामाजिक धार्मिक जगत का एक दीप्यमान नक्षत्र हम सबके बीच से लोप हो गया है। यह बहुत ही दुखद है, क्योंकि किशोर कुणाल जी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहते हुए समाज सेवा में जिस प्रकार से रत थे, बिहार के ही नहीं अपितु देश के अनेक क्षेत्रों में जो उनकी महती भूमिका थी वो कभी भुलाया नहीं जा सका। बिहार का ही नहीं देश का प्रत्येक वो सनातनी और वो सामाजिक व्यक्ति जो समाज में रत रहता है वह आज बहुत ही दुख की स्थिति में है। हम सब उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। सामाजिक धार्मिक जगत का एक दीप्यमान नक्षत्र हम सबके बीच से लोप हो गया है। यह बहुत ही दुखद है, क्योंकि किशोर कुणाल जी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहते हुए समाज सेवा में जिस प्रकार से रत थे, बिहार के ही नहीं अपितु देश के अनेक क्षेत्रों में जो उनकी महती भूमिका थी वो कभी भुलाया नहीं जा सका। बिहार का ही नहीं देश का प्रत्येक वो सनातनी और वो सामाजिक व्यक्ति जो समाज में रत रहता है वह आज बहुत ही दुख की स्थिति में है। हम सब उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। सामाजिक धार्मिक जगत का Mutyala Reddy, father of Indian cricketer Nitish Kumar Reddy, expressed immense pride after his son scored his maiden test century in Melbourne against Australia. Reddy thanked Nitish for bringing the family to this milestone and praised his achievements, highlighting the support from their hometown, Vizag. He also admired his son's humility and dedication, emphasizing that the country was not only a personal achievement but a moment of pride for the entire nation. మా ఫ్యామిలీని ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చిన నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి నేను నా కొడుకైనప్పటికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంటాను. ఎందుకంటే ఎక్కడో మారుమూల ఒక గ్రామం నుంచి ఈరోజు ఆస్ట్రేలియా తీసుకొచ్చి ఆస్ట్రేలియాలోనే మాకు ఇంత ఈ స్థాయిని చూపించినందుకు నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. మా అబ్బాయికి నేనే థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ద ఇంటర్నేషనల్ ఫస్ట్ సెంచరీ మెల్బోర్న్లో సెంచరీ కొట్టడం అంటే లెజెండ్ క్రికెటర్ గవాస్కర్, వివిఎస్ లక్ష్మణ్, రవిశాస్త్రి గారు ఇలాంటి వాళ్ళ ముందున ఆడటం కాకుండా ఆ గేమ్ని చూపించడం, అందరికీ ఆ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు అందరూ ఇంట్రెస్ట్గా చూడడం, అందరూ నేను ఫ్యామిలీగా నేను బాధపడుతున్నాను, కానీ వాళ్ళందరూ ఈరోజు ఎంత బాధపడుతున్నారంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కన్నీళ్లు చూసి నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. నిజంగా ఆనంద బాష్పాలు కూడా ఆనంద బాష్పాలతోని నితీష్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఇలాగే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలని, ఇంకా ముందు ఇలాంటి సెంచరీలు మరెన్నో కొట్టాలని భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ గ్రౌండ్కి వచ్చి ఆడడమే పెద్ద గ్రేట్. రవిశాస్త్రి గారు, గవాస్కర్ గారు బాబు గేమ్ చూసి కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చాయి. వాళ్ళకి ఆనంద బాష్పాలు రావడం మాకు షాకింగ్ ఉంది. ఇంతమంది మన నితీష్ని వాచ్ చేస్తున్నారా, ఇంత టాలెంట్ ఉందా బాబులో, నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది.
of course, we feel very proud. As a family member, I can't even express my words like how the day was went yesterday for us. So it's very proud moment for us. Okay, and how's it there in Vizag? How's the feeling over there? Like you don't believe, like we has to turn off our phones because we are getting that many calls from yesterday, and there are so many celebrations going on, and they are waiting for the family to come back to there to have a big bash there again. Okay, and ma'am, what do you want to say? That how's the feeling over there? We are all very happy. We are all proud. He said that he'll make us proud, and he did it, and he showed it yesterday. We are speechless actually. And how's the feeling like when he made century? He just sat on the ground. And It's his way of representing India. He's celebrating, he's keeping that bat, and he's representing India there. It is all happy. We are all one nation. We respect our nation, and we represent our nation. Shehzad Poonawalla, spokesperson for the Bharatiya Janata Party, responded to various statements made by Congress leaders following the demise of former Prime Minister Manmohan Singh. Poonawalla criticized Congress leaders, including Pawan Khera, for their remarks regarding the passing of Singh, questioning their respect and response to the loss of a prominent national leader. He also referred to the statements made by Sharmista Mukherjee, daughter of the late former President Pranab Mukherjee, as well as comments from Karnataka Minister Priyanka Kharge, Congress candidate Sandeep Dikshit, and AIMIM President Asaduddin Owaisi. Poonawalla expressed disappointment over the political rhetoric surrounding the death of Singh, emphasizing that such moments should be marked by respect and solidarity, not politicization. हमेशा से ये कहना होता है कि कम से कम डेथ में डिग्निटी होनी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने ओछी सियासत की है, कमतर सियासत की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो कांग्रेस पार्टी खुद अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखे कि जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जब ऑर्डिनेंस फाड़ा युवराज राहुल गांधी ने, तब क्या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान था क्या? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट सोनिया गांधी की बनी थी, एक पैरेलल सरकार चलती थी जो संजय बारूजी ने अपनी किताब में जिक्र किया है, जिस प्रकार से उनके फेयरवेल डिनर पर भी राहुल गांधी कभी गए नहीं, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे हो या आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता संजय सिंह और केजरीवाल हो, जिन्होंने सबसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ, आज वो लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेस पार्टी जाकर 2013 का डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही सरकार का कैबिनेट का निर्णय देखे ना, उस निर्णय के हिसाब से देश की सरकार ने जो भी संभव था वो किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए मेमोरियल की बात, 7 दिन नेशनल मॉर्निंग, फ्लैग को हाफ मास्ट पर लेना, उसके बाद पूरे स्टेट फ्यूनरल के साथ उनकी अंतिम विदाई करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए और देश की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पर कांग्रेस पार्टी बताए अपना इतिहास खंगाल के कि जो आज वो बातें कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी के शव को तो उन्होंने एआईसीसी में घुसने तक नहीं दिया। नरसिम्हा राव जी की अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि हैदराबाद में हुई, दिल्ली में नहीं हुई। इसी प्रकार का रवैया हमने देखा कि नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल जी के अंतिम संस्कार में लोग शामिल ना हो पत्र लिखा था। खुद राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। आम्बेडकर जी का भी अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं मुंबई में करवाया गया। इस पार्टी ने अलग अलग नेताओं के प्रति अपनाया है।
Priyanka Kaur of Aam Aadmi Party criticized BJP for opposing the party's Mahila Samman Yojana that promises 1,000 rupees and 2,100 per month to women. She accused BJP of attempting to block welfare schemes like free bus rides, electricity and water. Kakkar also alleged BJP's involvement in removing genuine voters from electoral rolls and vote to prevent these actions. She emphasized Aam Aadmi Party's commitment to protecting Delhi's residents and their rights. ने कहा है कि वो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपया देंगे, तब से भाजपा बुरी तरह बौखला गई है। भाजपा इस स्कीम का विरोध कर रही है और ये दिखाता है साफ कि दिल्ली में भाजपा की मंशा क्या है कि अगर गलती से भी वो जीत गई तो वो सबसे पहले ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो वो दिल्ली की महिलाओं को मिल रही फ्री बस यात्रा को रुकवा देंगे, कि वो दिल्ली में मिल रही फ्री बिजली को रुकवा देंगे, फ्री पानी को रुकवा देंगे। पर अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी ये सब करके दिखाया है और इस बार भी जब कहा है कि 2100 रुपए प्रति महीना प्रति महिला को मिलेगा तो वैसा भी वो करके दिखाएंगे। भाजपा को इस बात से तो दिक्कत नहीं हो रही कि परवेश वर्मा जी खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, वो पैसा किसका है, कहां से आया, कितना उनके घर में पड़ा है, इस बात की कोई जांच आदेश नहीं हो रहे। पर अरविंद केजरीवाल जी की ये स्कीम्स को उनको रोकने का हर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दिल्ली वाले होने नहीं देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, अगर देश में कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में अगर कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको हरदीप पुरी जी ने बसाया है और इस बात की जानकारी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर दी थी। जहां तक आपने देखा होगा कि हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं कि कैसे भाजपा जेन्युइन वोटर्स के नाम कटाने का प्रयास कर रही है। वो हमने एक प्रेस वार्ता करके बताया भी था कि कैसे फॉर एग्जाम्पल शहादरा कॉन्स्टिट्युएंसी में ही खाली भाजपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारी 11,018 एप्लीकेशंस डालते हैं वोटर डिलीट करने की। ये एक इलीगैलिटी है, इस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। ऐसे ही हमने उदाहरण दिखाए थे बाकी कॉन्स्टिट्युएंसी में भी, जंगपुरा में भी, आरके पुरम में भी, एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्युएंसी में। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने प्रमाण के साथ दिखाया कि कैसे भाजपा हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली की डेवलप Delhi witnessed various political reactions following the demise of former Prime Minister Manmohan Singh. Congress leader Udit Raj and RJD leader Tejaswi Yadav remember Singh for his significant contributions to India's economy and politics. BJP President JP Nadda and Congress leader Rahul Gandhi also honored his leadership. Meanwhile, the Delhi government's Mahila Samman scheme, which promises financial aid to women, is facing scrutiny, with BJP calling for an inquiry into its implementation and financial transparency. और एक जो रो थी जिसमें पीएम बैठे थे, होम मिनिस्टर बैठे, डिफेंस मिनिस्टर बैठे थे और भी मिनिस्टर बैठे थे मेन जगह पे। राहुल जी को और सोनिया जी को बल्कि किनारे पे बैठने का व्यवस्था थी और उनके परिवार, मनमोहन सिंह जी के परिवार के लोग भी नहीं पहुंच पाए और उनको रास्ते से उतार दिया गया। पैदल चल करके आने की कोशिश किया, पता नहीं सारे आ पाए कि नहीं। प्रियंका गांधी जी ने जब देखा तो उन्होंने अपनी कार में जगह दिया ले आने के लिए। तो कुल मिलाकर के हाईजैक कर लिया था बीजेपी ने इस कार्यक्रम को, यानी दाह संस्कार को भी ये हाईजैक कर लेते हैं। इनको केवल लाभ और चुनावी फायदा के लिए ही सब कुछ करना है। सिख वोट को रिझाने के लिए, सिख कम्युनिटी को रिझाने के लिए ये सब किया और कल तो बहुत ही मिसमैनेज था और केवल दूरदर्शन को अलाउ किया गया और दूरदर्शन उनके परिवार के लोगों को दिखाना चाहिए था या सारी मीडिया उनके परिवार के लोगों को दिखाना चाहिए था और जिस पार्टी के थे उनको दिखाना चाहिए था। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को दिखाना चाहिए। तो कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता थे, उनको ना दिखाकर केवल मोदी जी, अमित शाह जी, इन्हीं को दिखाया जा रहा था
तो ये तो स्थिति है और बड़ा शर्म आती है कि ऐसे भी प्रोग्राम को ये लोग हाईजैक कर लेते हैं। और क्या रहा मीडिया का फ्रीडम? डीडी जो सरकारी भूपू है उसको कहा गया, उसी के हिसाब से विजुअल सारे बनाए गए हैं। तो ये तो बहुत ही मिसमैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट करने का, हर चीज को फायदा लेने का ही इनका उद्देश्य रहता है। न देश की सेवा, न मानवता, न कुछ। ये किसी चीज से इनका कंसर्न नहीं है। जब परिवार के लोग न पहुंच पाए, उनको बैठने की जगह न हो, खड़े रहें और बड़ी मशक्कत से पहुंच सकें, तो उनका हक तो बनता है कि नहीं बनता? कांग्रेस के नेताओं का हक बनता है कि नहीं बनता है? और जो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी है जिसका इतना बड़ा दिल है, इतना सम्मान कोई पार्टी दे नहीं सकती। और मोदी जी होते तो ताश के पत्ते की तरह फेंट देते। 35 साल तक राज्यसभा का मेंबर बनाकर कांग्रेस ने रखा है उनको, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे हैं। इससे ज्यादा कोई रिस्पेक्ट और रिगार्ड कोई पार्टी दे सकता, मैं तो समझ ही नहीं। Indian Minister Prahlad Joshi, during his two-day visit to Tripura, highlighted the government's focus on the Northeast under Prime Minister Narendra Modi's leadership. He reviewed his department works and the implementation of key government schemes in Agartala. Joshi acknowledged significant progress made under Chief Minister Manik Saha and discussed further development plans. Emphasizing the region's strategic importance, he reaffirmed that the Northeast remains a top priority for the government, aiming to address the development gap from previous administrations. एक तो प्रधानमंत्री जी का जब 2014 से ही जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेके मोदी जी का एक लक्ष्य है एक्ट ईस्ट, और इसके लिए उन्होंने डोनियर जो मंत्रालय है उसके द्वारा सभी मंत्रियों को, विशेषतः कैबिनेट मंत्रियों को रेगुलरली नॉर्थ ईस्ट का राज्य जो है, प्रदेश जो है, उधर विजिट करना है। भारत सरकार का जो आजकल विशेष स्कीम भी नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी के नेतृत्व में अभी चल रहा है, उसका रिव्यू भी करना है। और हमारे खुद का डिपार्टमेंट जो है उसका भी जो प्रोग्राम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। इसके कारण इस बार मैं त्रिपुरा आया हूं, अगरतला आया हूं। मेरे डिपार्टमेंट का तो मैंने डिटेल में रिव्यू किया हूं। इसके साथ प्रमुख जो माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में मैं रिव्यू किया हूं। इधर के माननीय मुख्यमंत्री माणिक शाह जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम इधर हुआ है। आगे भी कुछ इशू माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मंत्रीगण के द्वारा, अधिकारीगण के द्वारा मुझे ध्यान में लाया गया है। उसके लिए हमने कुछ सोल्यूशन इधर ही मैं बता के जा रहा हूं। बाकी जो इशू है संबंधित मंत्रालयों के चर्चा करके हमने हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट है। उस नॉर्थ ईस्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा एक उसके ऊपर एक तरह आप बोल सकते हैं कंसर्न भी है, और इसका डेवलपमेंट के लिए उनका ऑलवेज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डेवलपिंग दिस एरिया, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। और इधर 70-75 इयर्स में कांग्रेस, विशेषतः कांग्रेस के कालखंड में जो डेवलपमेंट के विषय में इधर बहुत ही कम काम हुआ है, वो आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको इधर भेज रहे। उसी मिशन के साथ मैं इधर आया हूं। सर, आपने 2 दिन का सफर में त्रिपुरा विजिट करने के लिए आए हैं, कई जगह विजिट किए हैं और आज रिव्यू मीटिंग भी किए हैं, इस तरह क्या कहना चाहिए? एक तो प्रधानमंत्री जी का
Butsa Satyanarayana, senior leader of the Vaisakh Congress Party, addressed a press conference in Visakhapatnam, AP. During the briefing, Satyanarayana highlighted the significant achievements of the Vaisakh CP government, focusing on its welfare schemes aimed at farmers, youth and women. He also spoke about the state's ongoing development initiatives, particularly in infrastructure and economic growth. Responding to criticism from opposition parties, Satyanarayana defended the leadership of Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy, emphasizing the government's commitment to transparency, accountability and public welfare. The press conference was an opportunity for Satyanarayana to outline the party's future plans and reaffirm its dedication to the progress of Andhra Pradesh. గారికి ఇప్పుడు నివాళులు అర్పించుకున్నాం. అందరం కలిసి ఆయన స్మరించుకున్నాం. ఒక మహోన్నత వ్యక్తిని ఈ దేశం కోల్పోయింది. ఇప్పుడే నాకంటే ముందు మాట్లాడిన మన అమర్ గాని, రవీంద్రబాబు గారు గాని, రవిబాబు గారు గాని ఆయన చేసిన సంస్కరణలు గాని, ఆయన చేసిన కృషి గాని అన్ని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఈ దేశంలో ఎంతోమంది ప్రధానులు చేసి చూసాం మనం. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఈయనకైతే ఈయన అన్నిట్లోనూ ఆ ఒక రంగమా రెండో ఒక రంగమా అది ఆర్థిక రంగమా, వ్యవసాయ రంగమా, లేకపోతే ఇంకొక రంగమా అనేది కాకుండా దేశం యావత్తు ఏది అవసరమో, ప్రజలకు ఏది అవసరమో, ఆ రోజున్న 100 కోట్ల మందికి ఏది అవసరమో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన సంస్కరణలు చేశారు. ఈ రోజు పేదవాడికి ఇస్తున్న పనికి ఆహార ఉపాధి పథకం ఉంది, NRGS. ఆ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదైతే సగటు ఉన్న మనిషికి కానీ సామాన్యుడికి 5,000 నోట్లోకి వెళ్ళాలి, ప్రతిరోజు కూడా ఆకలితో ఎవరు కూడా ఆకలి మంటలతో ఉండకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఆ రోజు ఆయన తీసుకొచ్చిన ఈ పథకం ఇవాళ దేశం అంతా కూడా ఇవాళ కొనసాగుతున్న సందర్భాన్ని కానీ లేదు దేశంలో ఒకే యూనిక్ కోడ్ ఉండాలని చెప్పి అందరికీ కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్న నేపథ్యం కానీ లేదా ఆర్థిక సంస్కరణలు కానీ ఏ అంశాన్ని తీసుకున్నా సరే ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇవాళ. అందుకే ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లు యావత్తు రాజకీయాలకు అతీతంగా రాజకీయం అనేది ఇవాళ ప్రధానమంత్రులు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు కానీ ఒక ప్రధానమంత్రి రాజకీయాలకి తో ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం. రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉన్నారు కానీ రాజకీయాలకు అతీతంగా నాకు దేశమే ముఖ్యం, నాకు దేశ ప్రజలే ముఖ్యం అనేది ముఖ్యంగా మన భారతదేశాన్ని తీసుకుంటే భారతదేశానికి ఒక్కటే సాధ్యం. ఈ ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ప్రధానమంత్రిని, ఒక శాస్త్రవేత్తని వచ్చి భారత రాష్ట్రపతిని చేసిన మరి ఘనత ఈ దేశంలో మన ఒక్క భారతదేశానికి ఉంది ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లో. మరి ఒక్కసారి అలాంటి నేపథ్యంలో ఇవాళ మరి వారు లేని లోటు చాలా తీరని లోటుని వారి తాలూకా స్మృతికి మనందరం కూడా చింతిస్తూ ఇవాళ ఆయన ఆత్మశాంతికి చేకూరాలని ఆయన తాలూకా ఆశయాలకి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి వంతున వారికి వచ్చిన విధంగా వారి దైనందిన జీవితంలో వారికి దోచిన విధంగా వారు దాంట్లో ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేయాలని మరి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని వారి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ. Atul Tiwari, speaking at the prayer meeting for filmmaker Shyam Benegal, paid tribute to his multifaceted legacy as a filmmaker, teacher, philosopher and social reformer. Tiwari highlighted Benegal's efforts in improving rural infrastructure, advocating for landless labourers and supporting the LGBTQ community. He recalled how Benegal's work in villages like one near Tirupati transformed communities, providing essential services like roads and hospitals. Tiwari also emphasized Benegal's dedication in the Rajya Sabha, where he fought for marginalized groups. Benegal's impact as a filmmaker and legislator was celebrated for his unwavering commitment to social justice and community welfare. As Shumantra told you, it was just a fortnight ago that I wrote a 250 pages book on the maestro Shyam Benegal, which is about 55,000 words in it. But believe me, this morning when Neeraji told me that I have to speak here today, I did not have a word. I did not know what to say here. So I thought it's better that I make some notes and then really come in front of you. I don't know where to begin and talk about which
Shyam Benegal. Shyam Benegal, the filmmaker. Shyam Benegal, the teacher, philosopher. Shyam Benegal, the guy who not only made films about villages and Mufassil towns, but also helped little villages and these little towns to get roads and schools and hospitals and water and electricity. Shyam Benegal, the lawmaker, who in his 6 years in Rajya Sabha tweaked the Constitution of India, or Shyam Benegal, the storyteller, who after retiring from the Rajya Sabha made a 10-hour long form on the making of the Indian Constitution. Shyam Benegal, the chap who fought battles for the rights of the landless laborers in the villages, or Shyam Benegal, the man who fought to get dignity to the LGBTQ community. Shyam Benegal, the man, gentleman, which is becoming a rarity in our society today. I think the people in this August gathering all know about Shyam Benegal, the filmmaker. At times the writer, at times the producer, but all the times the director of 24 feature films that he made in his life, 2 feature-length documentaries, scores of short films, and 700 plus ad films. Still, one thing I would like to emphasize here, when I came to Bombay and joined the film industry, when Shyam Babu was making the discovery of India in 1988, Spiritual leader Devikanandan Thakur spoke on the issue of the Sanatan board in Navi Mumbai, Maharashtra. Thakur emphasized the importance of Sanatan Dharma in preserving the values of spiritual wisdom, culture and tradition. He expressed strong support for the Sanatan board, highlighting its role in promoting the teachings of Sanatan Dharma and addressing the needs of the community. Thakur also stressed that the board would work to provide a platform for spiritual growth and unity, urging followers to uphold the principles of love, compassion and righteousness as core values of Sanatan Dharma. He called for collective efforts to strengthen the Sanatan tradition and ensure its positive impact on society. जब तक बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास न हो जाए, वो पहले गलती माने कि हाँ हिंदुओं के साथ यहाँ बुरा हुआ है और सरकार उसकी जिम्मेदार है, और हम इस गलती को मानते हैं तो उसको फिर, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं ना, हम तो फिर भी दया कर देंगे, पर वो दया करके खा पी के फिर हमारे ही लोगों को मारेंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा, वो सरकार का डिसीजन है, मैं तो कोई सरकार का मेंबर नहीं हूं, वो तो सरकार ही करेगी, जो करेगी सोच समझ के ही करेगी। पर मेरे अगर कोई विचार मानेगा और विचार सुनेगा या विचार जानना चाहेगा तो मैं कहूंगा उसे एक भी टन चावल भेजने की आवश्यकता नहीं। पहले सरकार वहां की ये डिसाइड करे कि हिंदुओं की सुरक्षा है कि नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं कर सकती तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को चाहिए कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग देश बना कर दे और उन हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा हो, इस बात की गारंटी भरे। तो फिर मोदी जी तो और हमारे भारत के सभी सनातनी दयालु हैं, केटन मांग रहे हैं। अरे देखिए, हम उसका नहीं कह रहा हूं, हमें नहीं पता, वो सरकार का अपना डिसीजन है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वो 50,000 टन मांग रहे हैं, हम भारत सरकार से कहेंगे उन्हें 1,00,000 टन भेजो, लेकिन उससे पहले हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं के लिए वहां देश की डिमांड करो कि हिंदू राष्ट्र वहां सबसे पहला राष्ट्र बने, जिससे हमारे हिंदू सब सुरक्षित हो। आपने तो हमें बाद में बताया, हमारे ठाकुर जी ने प्रेरणा हमें पहले ही दी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, और कसम से हमको नहीं पता कि आप ये बोलने वाले हैं, या हमें नहीं पता कि ऐसा पैसा उनके अकाउंट में गया भी है। ठाकुर जी ने हमको ये प्रेरणा क्यों दी? हमने अपने आप से बोला ये। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कोई न कोई शक्ति हम सबको प्रेरित कर रही है इस समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। आपने नहीं, मुझे पता भी नहीं था जो अभी आपको कह रहे हैं, और मैं अपने आप से बोल रहा हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये चौपाई यहां पर सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ही प्रेरणा दे रहे हैं, और ये सभी वर्तमान जो गद्दियों पे बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरफ सीरियसली सोचना पड़ेगा
और एक भी व्यक्ति ऐसा बाहर से आया हुआ उसके अकाउंट में पैसा न जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। और जो इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें उनके घर में वापस भेजा जाए। तो ये प्रार्थना। Well, that's the wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.